We will today discuss is the mercantilist view of international trade. Mercantilist view of international trade वो policy होता था of European great powers. It was based on the premise that national wealth and power are best served by increasing exports and collecting precious metals in return. Yeah. So अगर एक इकोनॉमी या एक कंट्री का वेल्थ और पावर अगर जानना है तो आप वो बेस्ट कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड कलेक्टिंग प्रेशियस मेटल्स इन return. Mercantilists also believe that more gold and silver in a country, जितना ज़्यादा gold और silver होगा in a country accumulate, the richer it becomes. Mercantilism advocated maximizing exports in order to bring more specie and minimizing imports through the state imposing very high tariff on foreign goods. This view argues that तो ये व्यू के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट थे कि ट्रेड इज अ जीरो सम गेम. क्यों जीरो सम गेम है? विद विनर्स हु विन डज ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ द लूजर्स. Winners who win does only at the expense of the losers, and one country's gain is equal to another country's loss, so that the net change in wealth or benefits among the participants is ज़ीरो. तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड कर भी रहे हैं तो वो उसका नेट इफेक्ट ज़ीरो ही है, क्योंकि एक कंट्री का गेन इज इक्वल टू अनदर कंट्री का लॉस. तो इधर इक्वेशन प्लस माइनस का होगा. द आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ बाय mercantilists were later proved to have many shortcomings by later economists. So I hope it is clear what is mercantilized view of international trade. Mercantilism, which was a policy of European great powers, was based on the premise that national wealth and power are best served by increasing exports and collecting precious metals in return. Mercantilists also believe that more gold and silver in a country accumulate, the richer it becomes. Mercantilism advocated maximizing exports in order to bring in more specie and minimizing imports through the state imposing very high tariff on foreign goods. This view argues that trade is a zero-sum game, with winners who win thus only at the expense of losers, and one country's gain is equal to another country's loss, so that the net change in wealth or benefits among the participants is zero. The arguments put forth by mercantilists were later proved to have many shortcomings by the later economists. Right? Now we will discuss theory of absolute advantage. Mercantilism में क्या होता था? एक पॉजिटिव होता था, एक नेगेटिव होता था, तो एक जीरो सम गेम हुआ करता था. लेकिन थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में दोनों कंट्रीज के लिए पॉजिटिव ही है. कैसे? एडम स्मिथ है जो है was the first to put across that the possibility that international trade is not a zero sum game. एडम स्मिथ ने बोला है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम स्कीम. अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड और फ्री इंटरनेशनल कंपटीशन, उन्होंने बोला है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज द डिटर्मिनेंट ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटरनेशनल ट्रेड. अगर इंटरनेशनल ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिशियल करना है तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ही इज इम्पॉर्टेंट. राइट? So Adam Smith was the first to put across that possibility that international trade is not a zero-sum game. According to Adam Smith, who supported unrestricted trade and free international competition, absolute cost advantage is the determinant of mutually beneficial international trade. The absolute ये theory क्या point out करता है? The absolute cost advantage theory points out that a country will specialize in the production and export of a commodity in which it has absolute cost advantage. In other words, exchange of goods between two countries will take place only if each of the two countries can produce one commodity at an absolutely lower production cost than the other country. So important. What does this theory point out? That a country will specialize in the production and export of a commodity in which it has an absolute cost advantage. In other words, exchange of goods between two countries will take place only if each of the two countries can produce one commodity at an absolutely lower production cost than the other country. Smith's thought on that is the value of goods in this under this theory, the value of goods is determined measuring the labor incorporated in them. The value of good कैसे determine किया जाता है? Labor measure करके. Very important. The value of goods is determined by measuring the labor incorporated in them. That is theory of absolute advantage. This theory is generally presented with an example of hypothetical two countries and two commodities model. Two country, two commodities model. यहाँ पे absolute advantage exists between nations when they differ in their ability to produce goods. अगर वहाँ पे ability to produce goods differ करता है तो ही absolute advantage exist करता है.
Each nation can produce one good with less expenditure of human labor or more cheaply than the other. As a result, the nation has an absolute advantage in the production of one good. जैसे कि यहाँ पे लिखोगे, इधर बोला है output per hour of labor. 6 आउटपुट है ऑफ बुशल्स ऑफ व्हीट इन 1 आवर एंड हियर 1 आउटपुट है इन 1 आवर. तो इधर एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका है? ए का है. क्लॉथ के केस में हियर इट इज़ 4 एंड हियर इट इज़ 5 इन 1 आवर. तो इस सेकेंड केस में हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज है. तो इसीलिए वो बोलते हैं कि कंट्री ए इज़ मोर एफिशिएंट दैन कंट्री बी और देन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर country B in production of wheat. Similarly, country B is more advantageous over country A or has an absolute advantage over country A in the production of cloth. If both nations can engage in trade, अगर वो both nations engage in trade with each other, each nation will specialize in the production of that good it has an absolute advantage in and obtain the other commodity through international trade. Therefore, country A would specialize completely in the production of wheat and country B in the cloth, right? And mutually gainful trade is possible. कब possible हो सकता है mutually gainful trade? Only when one country has an absolute advantage and the other country has an absolute disadvantage in the production of at least one commodity. अगर दोनों प्रोडक्ट्स में एक कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो उस टाइम पे क्या होगा? दैट फॉर दैट वी विल डिस्कस द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. सो फॉर राइट नाउ आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज द थ्योरी ऑफ absolute advantage. एक point, specialization in the production of the export of a commodity where it has an absolute cost advantage, right? So this is all about theory of absolute advantage. Next we will discuss the theory of comparative advantage. Theory of comparative advantage was developed by David Ricardo, right? What was David Ricardo saying? That the law of comparative advantage states that even if one country is less efficient than the other country is less efficient than the other nation in the production of all commodities, there is still scope for mutually beneficial trade. क्या बोला? अगर एक country is less efficient than the other country in the production of all commodities, there is still scope for mutually beneficial trade. The first nation should specialize in the production and export of a commodity in which its absolute disadvantage is smaller and import the commodity in which its absolute disadvantage is greater. Comparative advantage differences between nations are explained by exogenous factors which could be due to the differences in national characteristics. Labor differs in its productivity internationally. Labor differs in its productivity internationally and different goods have different labor requirements. Therefore, comparative labor productive advantage was Ricardo's predictor of trade. Comparative labor productivity advantage was Ricardo's प्रेडिक्टर ऑफ ट्रेड. जैसे कि इधर देखोगे कंट्री बी ना दोनों केस में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है और कंट्री ए का दोनों केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, राइट? तो कंट्री ए क्या करेगा? 6 वीट बनाने के लिए 1 घंटे का लेबर लग रहा है और 4 ये बनाने के लिए 1 घंटे का लेबर लग रहा है. तो लेबर ज़्यादा एफिशिएंटली कहाँ यूज हो रहा है? व्हेन यू कंपेयर दिस बोथ, ऑफकोर्स वीट के केस में. तो कंट्री ए क्या करेगा? स्पेशलाइज और एक्सपोर्ट करेगा ये वीट. और कंट्री बी का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कहाँ पे ज़्यादा है? वीट के केस में. और कहाँ पे कम है? क्लॉथ के केस में. तो कंट्री बी ये स्पेशलाइज और एक्सपोर्ट करेगा, राइट? सो दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड ओवर हियर, राइट? सो in this example, country B can produce only 2 yards of cloth per hour of labor. 2 yards of cloth per hour of labor, and country B has an absolute disadvantage. Absolute disadvantage in the production of both wheat and labor. However, since B's labor is only as half productive in cloth but 6 times less productive in wheat compared to country A, country B has a comparative advantage in cloth. On the other hand, country A has an absolute advantage in both wheat and cloth with respect to country B. But since its absolute advantage is greater in wheat than cloth, country A has a comparative advantage in the production and exporting wheat. तो B का comparative advantage cloth में है और A का comparative advantage wheat में है. Yeah. So in a two nation, two commodity world, once it is established that one nation has a comparative advantage in one commodity than the other nation,
the other nation must necessarily have a competitive advantage in the other commodity. Country A's absolute advantage is greater in wheat, and so country A has a comparative advantage in producing and exporting wheat. Country B's absolute disadvantage is smaller in cloth, so its comparative advantage lies in cloth production. According to the law of comparative advantage, both nations can gain if country A specializes in production of wheat and exports some of it and in exchange of country B's cloth. Similarly, country B should specialize in the production of cloth and export some of it for the exchange of country A. इसका मतलब जहाँ पे आपका comparative advantage है वो आप प्रोड्यूस करो, स्पेशलाइज करो और एक्सपोर्ट करो इन एक्सचेंज ऑफ द अदर कंट्रीज कंपेरेटिव एडवांटेज जहाँ पे उसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज स्मॉलर होगा. सो आई होप द वर्किंग इज वेरी क्लियर, राइट. रिकार्डो का ये कंपैरेटिव थ्योरी का बेसिस क्या था? लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, जो अस्यूम करता है कि हर एक कमोडिटी की कीमत एक्सक्लूसिवली डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर दैट इज गोइंग इनटू द प्रोडक्शन, और ये क्वाइट अनरियलिस्टिक होता है, राइट. तो इस केस में हाबरलर ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इज द वैल्यू ऑफ द फोरगॉन ऑप्शन इन रियल cost in macroeconomic terms as opposed to the cost in it's opposed to cost given in monetary. ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं. opportunity cost क्या है? basically the value of foregone option, right. अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या बोलता है कि एक कमोडिटी की कॉस्ट क्या होगी इज द अमाउंट ऑफ द सेकेंड कमोडिटी दैट मस्ट बी गिवन अप टू रिलीज जस्ट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फर्स्ट कमोडिटी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या बोलता है कि कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ द सेकेंड कमोडिटी दैट मस्ट बी गिवन अप टू रिलीज जस्ट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, राइट. And so a nation with lower opportunity cost, मैंने क्या बोला? Okay, from the beginning, opportunity cost of producing one unit of good X in terms of good Y may be computed as the amount of labor required to produce one unit of good X divided by the amount of labor required to produce one unit of good Y. That is, how much Y do we need to give up in order to produce one more unit of good X. Logically, the nation with lower opportunity cost in the production of the commodity has comparative advantage in that particular commodity. तो जिस nation का opportunity cost lower होगा एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ उस कमोडिटी का उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होगा. तो इंटरनेशनल ट्रेड नीड नॉट बी अ जीरो सम गेम. आपको समराइज करना है तो आप कैसे समराइज करोगे कि इंटरनेशनल ट्रेड नीड नॉट बी अ जीरो सम गेम. जो इंटरनेशनल डिफरेंसेस है इन द रिलेटिव फैक्टर प्रोडक्टिविटी आर द कॉज of comparative advantage and a country's export goods that it produces relatively efficiently. मतलब लेबर की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल डिफरेंसेस है इन रिलेटिव फैक्टर प्रोडक्टिविटी आर द कॉज ऑफ comparative advantage and a country's export goods that it produces relatively efficiently. This fact points to a tendency towards कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन. रिकार्डो ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि दो नेशंस विदाउट इनपुट फैक्टर मोबिलिटी स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड could result in increased total output and lower cost that if each nation tried to produce in isolation. Trade generates welfare gains and both countries can potentially gain from trade. Therefore, international trade need not be a zero-sum game. However, इस कंपैरेटिव एडवांटेज जो रिकार्डो लेके आया था उसके बहुत सारे लिमिटेशन भी है कि वो सिर्फ एम्फोसिस देता है सप्लाई कंडीशंस पे और एक्सक्लूड करता है डिमांड पैटर्न्स. मोर ओवर द थ्योरी डज नॉट एग्जामिन कि why country have different costs, why country have different costs. The theory of comparative advantage also does not answer the important question, why does a nation have comparative advantage in the production of a commodity and a comparative disadvantage in the production of another. ये why question को भी ये theory answer नहीं करता है. So this is all about comparative theory of comparative advantage. पहले क्या लिखोगे? रिकार्डो ने डेवलप किया था. फिर बोलोगे कि एक नेशन अगर लेस efficient है than the other nation in production of all commodity, there is still scope for mutually beneficial trade. पहला नेशन स्पेशलाइज और एक्सपोर्ट करेगा जहाँ पे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज छोटा है और इम्पोर्ट करेगा जहाँ पे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज
बढ़ा है। लेबर ना बहुत टाइप डिफर करता है इन प्रोडक्टिविटी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के गुड्स हैव डिफरेंट लेबर रिक्वायरमेंट। और इस इलस्ट्रेशन से आप बोलोगे कि कंट्री ए हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन व्हीट एंड कंट्री बी हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन क्लॉथ। फिर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन करोगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ फोरगॉन ऑप्शन, इट इज द या अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ द सेकेंड कमोडिटी दैट इज गिवन अप to release just enough resources to produce one extra unit of first commodity। और वो कैलकुलेट कैसे करोगे? और जिस नेशन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, उसका हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द कमोडिटी। फिर समराइज करना है तो क्या लिखोगे कि जो इंटरनेशनल डिफरेंसेस है इन द रिलेटिव फैक्टर प्रोडक्टिविटी आर द कॉज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स दैट इट प्रोड्यूसेस रिलेटिव एफिशिएंटली। This fact points to a tendency towards complete specialization in production. Ricardo demonstrated that for two nations without input factor mobility, specialization and trade could result in increased total output and lowered cost, that if each nation tried to produce in isolation. Trade generates welfare gains and both countries can potentially gain from trade. Therefore, international trade need not be a zero sum game. Yeah, so this is all about your theory of comparative advantage. Now we will discuss about the Heckscher-Ohlin theory of trade. ये Heckscher-Ohlin theory of trade को हम factor endowment theory of trade या modern theory of trade भी बोल सकते हैं according to P.A. Samuelson। यहाँ पे ये मॉडल जो Heckscher-Ohlin का मॉडल है वो स्टडी करता है that the case that two countries have different factor endowment under identical production function and identical preferences. The difference in factor endowment results in two countries having different factor prices in the beginning. Consequently, ये model imply करता है that the two countries will have different cost function. Even though both is producing cloth, one country will have capital ज़्यादा but labor कम, another country will have labor ज़्यादा but capital कम. So under the identical production function and identical preferences, two countries have different factor endowment, and these differences in factor endowment results in two countries having different factor prices in the beginning. ये theory state करता है कि comparative advantage in the cost of production is exclusively explained by the differences in factor endowment of the nation। तो जो comparative advantage है cost of production में वो हो सकता है by the differences in factor endowment of the nation। In general sense of the term, फैक्टर एंडोमेंट का मतलब क्या होता है? फैक्टर एंडोमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ द यूजेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग बोथ नेचुरल एंड मैन-मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नेवरदलेस, इन एक्सपोजिशन ऑफ मॉडर्न थियोरी ओनली टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इज लेबर एंड कैपिटल आर टेकन इनटू अकाउंट। तो फैक्टर एंडोमेंट क्या है? refers to the overall availability of usable resources including both natural and man-made means of production. In the exposition of modern theory, only two important factors, that is labor and capital, are taken into account. According to this theory, different regions have different factor endowments. Some regions have abundance of labor but scarcity of capital, whereas other regions have abundance of capital but scarcity of labor. Different goods have different production functions, that is, factors of production are combined in different proportions to produce different commodities. While some goods are produced by employing a larger proportion of labor and small proportion of capital, other goods are produced by employing a small proportion of labor and larger proportion of capital. So the each region is suitable, each region को क्या production करना चाहिए? वो production करना चाहिए of goods whose production it has relatively abundant supply of the requisite factors। जिसका abundant supply है of those factors, उसी का related product goods का production करना चाहिए। A region is not suitable for production of those goods or for whose production it has relatively scarce or zero supply of essential factors. Hence, different regions have different capacity to produce different commodities. Therefore, difference in factor endowment is the main cause of international trade as well as regional trade। ये इसका immediate cause क्या है? और according to Ohlin, the immediate cause of regional trade भी क्यों कहते हैं? Internal regional trade कि आप is that goods
can be bought cheaper in terms of money than they can be produced at home, and then this is the case of international trade as well. Yeah, the cost of difference of the relative price of goods is the difference the amount of factor endowments like capital and labor between both the countries. ये theory state करता है कि country के export depend on the endowment of resources whether the country is capital abundant or labor abundant. तो export कौन से क्या export करना चाहिए वो depend होता है endowment of resources के ऊपर कि वो country capital abundant है या labor abundant है. If a country is capital abundant one, it will produce and export capital intensive goods relatively more cheaply. Likewise, a labor abundant country will produce and export labor intensive goods relatively more cheaply. The labor abundant countries have comparative cost advantage in production of goods which require labor intensive technology, and capital abundant countries have comparative cost advantage in the production of goods that need capital intensive टेक्नोलॉजी. ये थ्योरी के जो हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी है उसमें और दो थ्योरी स्टेट किए गए, हेक्स्चर-ओलिन ट्रेड थ्योरम और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन. अब ये हेक्स्चर-ओलिन ट्रेड थ्योरम क्या बोलता है कि स्पेशलाइज और एक्सपोर्ट करो वो कमोडिटी जिसका प्रोडक्शन रिक्वायर्स इंटेंसिव यूज ऑफ इट्स abundant resource, and import करो वो commodity जिसका production requires intensive use of scarce resources. So I hope it is clear. Specialize and export of a commodity whose production requires intensive use of its abundant resources, and import a commodity whose production requires intensive use of scarce resources. अभी ये important है. ये factor price equalization theorem बोलता क्या है? ये स्टेट करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड टेंड्स टू इक्वलाइज, वो फैक्टर प्राइसेस को इक्वलाइज करता है बिटवीन द ट्रेडिंग नेशंस. इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इट इज़ क्वाइट लाइकली, अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता है तो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि फैक्टर प्राइसेस आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज. इंटरनेशनल ट्रेड ये इक्वलाइज करता है द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिटर्न्स टू होमोजीनियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर प्राइसेस. जैसे कि इन अदर वर्ड्स क्या लिखोगे, जो वेजेस ऑफ होमोजीनियस लेबर है एंड रिटर्न्स ऑफ टू होमोजीनियस कैपिटल है विल बी द सेम इन ऑल द नेशंस विच एंगेज इन ट्रेडिंग. द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम postulates that if the price of the output of the goods are equalized between the countries engaged in free trade, the price of the input factors will also be equalized between countries. क्या बोला मैंने? प्राइस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड, जो आउटपुट ऑफ गुड्स हो रहा है उसका प्राइस है, अगर वो इक्वलाइज किया जाता है बिटवीन द कंट्रीज एंगेज इन फ्री ट्रेड, देन द प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर्स विल ऑल्सो बी इक्वलाइज बिटवीन द कंट्रीज. दिस इम्प्लाइज दैट वेजेस एंड रेंट्स विल converge across the countries with free trade. In other words, trade in good is a perfect substitute for the trade in factors. कि goods का trade करना perfect substitute है for trade in factors. तो ये theorem put forth that foreign trade eliminates the factor price differential. The factor price equalization theorem is in fact a corollary to the Heckscher-Ohlin trade theory. It holds truly on as long as Hoxton theory comes true. So this is all about factor price equalization theorem. Important है, again let's discuss. ये state करता है कि international trade tends to equalize the factor prices between the trading nations. In the absence of foreign trade, it is quite likely that the factor prices are different in different countries. International trade equalizes the absolute and relative returns to homogeneous factors of production and their prices. The wages of homogeneous labor and the returns of the homogeneous capital will be same in all those nations which engage in trading. ये theorem और बोलता है कि if the price of the output of goods are equalized between countries engaged in the free trade, then the price of input factors will also be equalized in between the countries. This implies that the wage and rents will converge across the countries with free trade, or in other words, trade in goods is a perfect substitute for trade in factors. This theory puts forth that the foreign trade eliminates the factor price differentials. Right? So this is all about Heckscher-Ohlin theory of trade. Starting का आप factor endowment का discuss the difference or the comparison between the theory of comparative cost and modern theory. Theory of comparative में cost क्या होता था? सिर्फ labor consider किया जाता है based on the labor theory of value, और consider करता था labor as the sole factor of production and presents a one factor model.
पहला क्या है कंपैरेटिव कॉस्ट में, बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, कंसिडर्ड लेबर एज द सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रेजेंस अ वन फैक्टर मॉड्यूल। यहाँ पे क्या है, लेबर के बदले based on the money cost which is more realistic, widen the scope to include labor and capital as the important factors of production. This is a two factor model and can be extended to more factors. तो comparative में cost क्या था, based on the labor theory of value, based on the money cost which is more realistic, considered labor as the sole factor of production and presents a one factor module, widen the scope to include labor and capital as important factors of production. This is a two factor model and can be extended to more factors. यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड को एक अलग अलग तरीक़ों से ट्रेड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटर रीजनल ट्रेड का स्पेशल केस एक इंटरनेशनल ट्रेड है करके वो बताते हैं. सो ट्रीट इंटरनेशनल ट्रेड इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड. यहाँ पे सिर्फ कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसर्न का स्टडी होता है. यहाँ पे कंसिडर करते हैं रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स एज वेल विच इन्फ्लुएंस द कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ गुड्स. यहाँ पे सिर्फ कंपेरेटिव कॉस्ट स्टडी करते हैं. यहाँ पे रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं जो इन्फ्लुएंस करता है कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ द गुड्स. यहाँ पे एट्रीब्यूट्स द डिफरेंसेस इन कंपेरेटिव एडवांटेज टू डिफरेंसेस इन द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. तो अभी इधर कंपेरेटिव एडवांटेज में डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. लेकिन यहाँ पे कंपेरेटिव एडवांटेज का डिफरेंसेस इज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन factor endowments. It does not take into account the factor price differences, considers the factor price differences as the main cause of the commodity price differences, does not provide the cause of differences in comparative advantage, explains the differences in comparative advantage in terms of differences in factor endowments. Normative tries to demonstrate the gains from national trade. Positive concentrates on the basis of trade. And first point, this basis is difference. The basis is the difference between the countries is comparative cost. Explains the causes of differences in comparative cost as differences in factor endowment. So these are the differences between comparative cost and modern theory. Quickly revising, the basis is the difference between countries is comparative cost. Explain the causes of differences between comparative cost as differences in factor endowment, based on labor theory of value, based on money cost which is more realistic. Consider labor as a sole factor of production and present a one factor model. Widen the scope to include labor and capital as important factors of production. This is two factor model and can be extended to more factors. Treats international trade as quite distinct from domestic trade. International trade is only a special case of inter-regional trade. Studies only comparative cost of the goods. Considers the relative prices of factors which influence the comparative cost of the goods. Attributes the differences in comparative advantages to differences in productivity efficiency of worker. Attributes the differences in comparative advantage to the differences in factor endowments. Does not take into account the factor price differences. Considers the factor price differences as the main cause of commodity price differences. Does not provide the cause of differences in comparative advantage. Explains the differences in comparative advantage in terms of differences in factor endowments. Normative tries to demonstrate the gains from international trade. Positive concentrates on the basis of discuss about the new trade theory. New trade theory to understand international patterns को लाया गया था. According to new trade theory, two key concepts give advantages to countries that import goods to compete with products from the home countries. ठीक है, तो there are two key concepts give advantages to countries that import goods, जो import करते हैं goods to compete with the products from the home country. पहले तो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा और नेटवर्क एफर्ट हो. इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे होगा कि जैसे फर्म प्रोड्यूसेस मोर ऑफ अ प्रोडक्ट, इट कॉस्ट पर यूनिट कीप्स गोइंग डाउन. सो इफ अ फर्म सर्व्स डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट इंस्टेड of just one, then it can reap the benefit of large scale of production. Consequently the profits are likely to be higher. तो ये पहला एडवांटेज होगा कि अगर फर्म एक प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, और अगर फर्म डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट दोनों को सर्व करेगा तो वो रीप कर सकता है द बेनिफिट ऑफ large scale production. Consequently the profits are likely to be higher. Network effect का कैसे advantage होगा? It refers to the way that a person's value of good or service is affected by the value of that good or services to
other. So क्या explain किया गया network effect? The way one person's value for good or service is affected by the value of that good or services to others. The value of the product or service is enhanced as उसका product और service का value enhanced कब होता है? As the number of individuals using it increases. तो दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज द बैंड वेगन इफेक्ट. इसको हम बैंड वेगन इफेक्ट की भी बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट और सर्विसेज का वैल्यू इंक्रीज होता है कि अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यूजिंग इट इंक्रीजेस. कंज्यूमर्स लाइक मोर चॉइसेस बट दे ऑल्सो वांट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद high utility, and network effect increases the utility obtained from these products over others. A good example will be mobile app such as WhatsApp and software like Microsoft in Windows. So these are the network effect. यहाँ पे क्या लिखोगे? It refers to the way one person's value for the good or service is affected by the value of that good or service to others. The value of the product or service is enhanced as the number of individuals using it increases. This is also referred to as the bandwagon effect. Consumers like more choices, but they also want products and services with high utility, and network effect increases utility obtained from these products over others. A good example will be a mobile app such as WhatsApp and software like Microsoft Windows. So according to the new trade theory, two key concepts give advantages to countries that import goods to compete with the products from the home country. So this was all about the new trade theory.